In Romans 10:14 it says, "How can they call on the one whom they have not believed? How can they believe on the one whom they have not heard? How can they hear unless someone preach to them? How can they preach if they're not sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who share good news." Greetings to you all in the precious name of Almighty Lord and Savior Jesus Christ. My name is Shirley Matthew. I'm one of the board members for Light the Candle Missions. I'm responsible for reviewing and monitoring the daily activities of the project at the field level. I would like to take this opportunity to thank each one of you for your love, your prayers, and your support towards Light the Candle Missions. Bible says in Psalms 118:23 that it is the Lord's doing and it's beautiful in our sight. Yes, I believe in it, for our confidence is in Lord Almighty. 2013 has been a very productive year for Light the Candle Missions. We started our fourth project in North India with lots of uncertainties and 100 children enrolled. The project is in a remote village away from internet connections and reliable phone services. The access to the village is very difficult, and the village is surrounded by forest areas, often threatened by terrorist and Maoist group. It's frightening even to think that these villagers survive in such situation. In spite of all these barriers, we're able to complete our second year with more children enrolled. And when we look into the faces of these children, we see the differences that Light the Candle has made in them. They have improved in lots of areas: their academics, their social skills, interpersonal skills, and even in other areas of moral values. Like this. Their day starts at 6:30 a.m. When the children come to the center, they gather together for a small, short time of devotion and prayer. They do get help from the teachers for their classroom activities, and after breakfast, they all head to school. They come back from school to the center in the evening, they finish their homeworks, and they do have physical activities where they have outdoor and indoor games. And after dinner and prayer, they head home. They have longer activities on Saturday and Sundays where they have games, sports, gardening, indoor and outdoor games. They do have spiritual activities, which includes praise and worship, learning Bible songs, learning action songs, Bible study. They memorize memory verses, and they have planned activities where they have medical camps, Vacation Bible School, parent-teachers meeting. These coordinators are able to go and visit the children's home. And also, they recently had a field trip where all these children were able to go to the city and meet the children there and participate in talent night. We monitor their daily attendance and not only the children, the staff daily attendance and activities. अच्छा काम किया था अच्छा नहीं करना चाहिए सबका वाले उसको डांटे बहुत बदमाश है तुम हम लोग ठगता है। मेरा नाम मुक्तिधान है, ये मेरी पत्नी है सलोनी बेंगरा। हम लोग का शादी 2002 में हुआ था, 14 मई को। और मेरा अभी एक बेटा है जिसका नाम हेली आलविस धान है।
और अभी हम लोग यहाँ पर अम्बाटोली चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में काम कर रहे हैं। और लाइट द कैंडल जो जून महीने से हमारे बीच में ये सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट हम लोग को दे करके यहाँ बच्चों के बीच में सेवा करने का अच्छा मौका दिया है। और हम लोग परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के सच्चाई के बारे में हम लोग बताते हैं, और बच्चे अभी उसको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। जो बच्चे इस क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे लोग प्रभु के बारे में जानकारी नहीं था, और वे लोग अभी प्रभु को जान रहे हैं। और पहले नशा पानी भी करते थे बच्चे लोग, और अभी जब यहाँ से आते हैं तो वो बच्चे लोग अभी नशा पानी नहीं कर रहे हैं। और बच्चे अभी जो एक दूसरे के साथ में बातचीत करने भी नहीं जानते थे, किसको आदर करना है, क्या करना है उसको भी। लेकिन अभी बच्चे लोग जो यहाँ ट्यूशन में आकर के, यहाँ मिनिस्ट्री में आकर के बहुत कुछ सीख रहे हैं और एक दूसरे को आदर सत्कार करते हैं। और जो हम लोग को इस लाइट द कैंडल मिनिस्ट्री जो हम लोग को सपोर्ट कर रही है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से हम अभी यहाँ तक जो प्रभु की सेवा करने के लिए मौका मिला है, जो हर परिवार के बीच में पहुँचने का भी मौका मिला है, जिसे हम परिवार में नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन इस लाइट द कैंडल मिनिस्ट्री के माध्यम से हर एक परिवार तक हम पहुँच सकते हैं और प्रभु के बारे में उनको हम बता सकते हैं, और उनके फ्यूचर के विषय में भी, उनके भविष्य के विषय में हम बता सकते हैं और बताते हैं। और अभी जो बच्चे यहाँ आते हैं उसमें 101 बच्चे आते हैं, और उससे और भी बच्चे उसके साथ में पढ़ने के लिए आते हैं, और भी उनके गार्जियन बोलते हैं कि मेरे बच्चे को भी ले लीजिए। लेकिन अभी हम लोग बोले कि हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं, प्रोजेक्ट में जगह नहीं है, 100 बच्चों का हम लोग के बीच में प्रोजेक्ट है, तो जिसके चलते हम लोग उनको रोक रखते हैं। लेकिन आता है, हम बोलते हैं कि उनको केवल पढ़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जो सुविधा है उधर से जो भी हम लोग को सामान भेजा जाता है उससे हम आप लोगों को नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से बताते हैं, और बच्चे लोग पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई करके आप लोग अपना भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, ऐसे हम बताते हैं। और वे लोग आता है और जो भी सामान मिलता है उनको नहीं देते हैं, जो बच्चे प्रोजेक्ट में है स्टेट उन्हीं को सामान देते हैं। और जो आप लोग हमारे बीच में लाइट द कैंडल मिनिस्ट्री के माध्यम से सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये सेवा को मैं आगे भी अच्छी तरह करते जाऊँगा। तो लाइट द Yesterday in Chintamani, to the kids I told them about the story of God, Jesus feeding the 5,000 people. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 5,000 ಜನರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. Anybody knows that story? ಆ ಒಂದು ಕಥೆ ಸಂಭವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Okay. So you have to ask your teacher to teach you the story, but I'll tell you very shortly. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹತ್ರ ನೀವು ಆ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, hit your life. If you're happy and you know, hit your life. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and each one of us to be his stewards on this earth. He wants us to be an instrument for him to work through. In Proverbs 22:6 it says, "Train up a child in a way he should go, so that even when he gets old, he shall not depart from it." And I believe that if a child develops reverence to God and surrenders his life to God at an early age, that God will enable him and use him as his instrument. And not only that, all the things that he has learned in his early age will follow him. For the last 20 years, God has enabled me to share the goodness and gospel of Christ among the children. It's my passion and I love doing it. Care and compassion is the mission of each team members, and every one of us has a testimony to say. And I believe joining Light the Candle mission was God's plan for me, and it has only broadened my avenue to work for him even more.
Like Mukti Dan, the project coordinator, had said, there are more parents coming over and asking them to enroll their children in the project. There are more villages waiting, requesting us to adopt them, but we're limited because of the finances. $15 a month goes a long way, and it covers a lot of their basic needs. Let me plead with you. Would you open your heart and listen to the cry of that child in need? Would you be that angel for the child and decide to share a small portion of your blessing with that child? And if you do not want to make a commitment, you can do a one-time donation. Any amount is acceptable, just like the lunch meal of that boy and the oil of that widow. God is able to do mighty things with little. He's looking for a willing heart. Let your existence be for a purpose. Live a mission-driven life.